So we have finally come to my last couple of lectures on unsteady exact solutions, basically dealing with some classic problems known as Stokes problems. So our learning objectives are obtaining solutions to these unsteady problems, what we call as Stokes problems, and we will examine the flow behavior from these solutions. And the main importance of studying these Stokes problems is that we learn how to use pi theorem, Buckingham pi theorem, and techniques of complex variables to solve problems similar to Stokes problems. So there are many other problems which are mathematically similar to Stokes problems. So once we have learned how to solve Stokes problems, where some very interesting use of pi theorem and techniques of complex variables is to be learnt, we will be in a position to solve problems which are similar to Stokes problems. Right, so let us start looking at these Stokes problems. So these are unsteady unidirectional flows, of course in two dimensions or in a plane. So now I would like to mention some general remarks on the unsteady unidirectional flow solutions. All the steady unidirectional flow exact solutions that we have been seeing so far, type 1, type 2 and type 3, which means flows in white channels and steady flows in pipes and ducts, and then there were annular flows in type 3. So these steady unidirectional flow solutions that we have discussed earlier can all be investigated for transient analysis, which is basically their startup phase from rest. Okay, so I have been mentioning this many times that if you want to actually follow the history, how the steady state is attained in all these flows, you will have to use unsteady analysis of the Navier-Stokes equations, or transient analysis. So that is one aspect of unsteady unidirectional flows. Well, I will not be actually discuss the unsteady or transient analysis of these exact solutions in this current course that we are going through. That if anyone is interested, he can, as an advanced study, he can do it as a self-learning exercise from some of the advanced texts rather. So normally undergraduate level पे ये नहीं take up किया जाता है, because you will have to learn some advanced techniques for solving partial differential equations in order to do this transient analysis. Next, second type of unsteady unidirectional flow that you can think of is where the driving force is oscillatory or periodic in time, so that the flow also eventually oscillates in time. This is kind of a forced oscillator problem, something you might have done in your earlier physics courses, where forced oscillations and forced oscillator systems have been taught to you in mechanics as well as in electrical systems. So for as far as flows are concerned, there are some examples, common examples of flows which are driven by oscillatory or periodic forces in time. So one is flow caused by oscillatory motion pressure gradient. So the motion pressure gradient could be oscillatory in time, and the most common example that I can think of is flow inside blood vessels, let's say in our bodies. So as you know, the pressure in our pressure generated by the heart, that is that has a very classic oscillatory cycle in time. So in my vessels also the motion pressure gradient is oscillatory, and the flow takes place due to that.
And there is a second example of flow caused by oscillatory moving surfaces. So there are many examples in technological environment and in engineering where there is some surface which is oscillating or moving, and it is causing a oscillatory flow. So let us now talk of our main subject of this lecture, Stokes problems. By the way, this lecture is in two parts, so we are going through the first part now, and after the end of the first part you can then watch the video for the second part. Now, what are Stokes problems? These are unidirectional unsteady flow problems over a large planar surface induced in an infinite expanse of fluid by the motion of surface in its own plane. So this is important. We can just read it and understand it carefully. So in fact, the figure shown on the right explains the problem. The figure shown below represents the physical scenario. So there is an unbounded expanse of fluid above the planar surface, infinity तक extend करता हुआ मान लीजिए planar surface से ऊपर fluid which is initially at rest. So the velocity u is 0 at t0, and then the planar surface is given some time dependent motion in its own plane. So plane में अगर move कर रहा है तो उसका जो velocity है will be along x. Let's say जिस direction में वो move कर रहा है उसी को हमने x ले लिया है. So then the velocity at the surface due to no slip condition is u equal to the velocity of the tangential velocity of the planar surface, which is capital U as a function of time, right? So this is what we call as Stokes problem. Okay, अब इसमें दो problems कैसे बनाई गई हैं? It is because of some specific बाउंड्री कंडीशंस. तो जो आपने यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है बाउंड्री कंडीशन u0 t इज इक्वल टू कैपिटल U फंक्शन ऑफ टाइम. तो अगर कैपिटल U फंक्शन ऑफ टाइम आप कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ले लें, फॉर एग्जांपल एक पीरियोडिक कॉस या साइन फंक्शन से ले लें u नॉट कॉस ओमेगा t या साइन, तो एक स्टोक्स प्रॉब्लम बन जाती है. इसी तरह से एक इम्पल्सिवली स्टार्टेड प्लेट की प्रॉब्लम है प्लेनर सरफेस की, तो उसमें द वेलोसिटी इज सिंपली सेट इम्पल्सिवली एज u0 t इज इक्वल टू कैपिटल U नॉट. मीन्स वो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी नहीं है, जीरो वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी है u नॉट, बट वो इम्पल्सिवली सेट इन की गई है. तो उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो वी विल बी सॉल्विंग. ओके, सो दीज आर दी स्टोक्स प्रॉब्लम्स. तो पहले जनरल एनालिसिस कर सकते हैं विद जनरल टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन विच वी हैव शोन इन द फिगर एंड सिंप्लीफाई आवर इक्वेशंस एंड एवरीथिंग. एंड सारे कंसिडरेशंस को लास्ट तक सिंप्लीफाई करके उसके गवर्निंग इक्वेशंस वी कैन राइट एवरीथिंग इन अ वेरी जनरल वे. तो स्टोक्स प्रॉब्लम्स दोनों जो हैं, दोनों के ही गवर्निंग इक्वेशन BC वगैरह हम जनरल सेंस में लिख सकते हैं. सो लेट अस लुक एट दैट हाउ वी कैन डू इट. The governing equations for this flow would be same as that for type 1 or type 2 categories जो हम पहले देख चुके हैं. तो simplification already किए हुए हैं, we don't need to reinvent the wheel now, so we will use all that effort directly here. So type 1 type 2 के जो equation थे वो ये सामने आपके लिखे हुए हैं, where motion pressure is only a function of x and t, and u velocity can be a function of y, z and t. Because of the incompressible continuity equation, it is not a function of x. Right, now we will show that for the Stokes problems, अगर type 1 type 2 के equations if you are not able to recall, then you can go back to those lectures and confirm these equations from there. Now we will show that for the Stokes problems, if body force along x is 0, अगर body force along x नहीं है, then we will show that del pm del x will also be 0. This is a very significant step forward in Stokes problems. Okay, so इस पे जरा I would request a lot of attention here. So how this is proved? This is proved as follows.
So first I write the relation between the motion pressure gradient and the thermodynamic pressure gradient, where the body force will be explicitly seen. So minus del Pm del x is equal to minus del P del x plus rho naught Bx. If you remember, इन्हीं दोनों को combine करके हमने motion pressure gradient लिखा था original Navier-Stokes equation में. So general relation between motion pressure and thermodynamic pressure, उसकी differential relation जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है. Right. Now if you take Bx as 0, then the important outcome is that the motion pressure gradient along x is same as thermodynamic pressure gradient along x. Okay, so ये दोनों बराबर हैं, दोनों derivatives. And of course, since we have already shown that del Pm del x is a function of x and t, it means that the thermodynamic pressure gradient del P del x is also a function of x and t. Now let us take a close look at the momentum equation, rewriting it like this. Terms को थोड़ा rearrange किया गया है, that's all. And we can then argue that solution is possible only. ये हम पूरा 3 lectures में हमने बार बार इस टेक्निक, इस स्ट्रैटेजी, इस ऑब्जर्वेशन को बार बार सक्सेसफुली यूज किया है. So we again take a look at this equation and conclude that solution is possible only if LHS is equal to RHS for all YZT and XT. So it means that it's only possible if right hand side and left hand side are a function of time alone, है ना, because एक साइड x and t का फंक्शन है, दूसरी साइड yzt का फंक्शन है. तो ये इन जनरल पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन जब तक ये दोनों साइड्स फंक्शन ऑफ t ना हो. ओके, so it implies that my motion pressure gradient, which is the left side, is a function of time only. Okay, now once this conclusion is there, by the way, you can't conclude that u is a function of t only, because यहाँ पे जरा सा केयरफुल होना होता है, because जो राइट साइड है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव्स हैं. सो एक्चुअली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट ये जो सेकेंड डेरिवेटिव्स हैं u के y और z के रिस्पेक्ट में, ये डेरिवेटिव्स ऐड अप करके कोई फंक्शन नहीं दे रहे हैं y और z का, एंड दैट्स व्हाई द राइट हैंड साइड विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ t. ओके, सो सिमिलरली ये सारी बात इसमें जरा सा केयरफुल रहने की है. ओके, सो नाउ what we get here is that del P del x is a function of time alone. Okay, now once we get this implies that del P del x is independent of y and z. Okay, and now this implies that del P del x at any point y, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है y z के, तो at any point y for all times it is same as del P del x at very large distances from the planar surface. Because वो y के इंडिपेंडेंट है, तो जो भी वैल्यू बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे होगी del P del x की, प्रैक्टिकली y टेंडिंग टू इंफिनिटी, वही वैल्यू नियर द प्लेनर सरफेस भी होगी फॉर ऑल वाइज. नाउ फॉर ऑल टाइम्स ऑफ कोर्स. अब अगर हम देखें तो हमने फ्लूइड जो है वो एक इनिशियली हमने स्टैग्नेंट स्टेशनरी फ्लूइड लिया है एंड एट टाइम t0, और जब ये मोशन स्टार्ट होगा, प्लेनर सरफेस मूव करना शुरू करेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू विस्कोसिटी मोशन की वो फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट होती चली जाएगी और मोशन डेवलप होता जाएगा. But we expect that at very large distances from the surface, practically y tending to infinity, theoretically y tending to infinity, then we can say that उतना फार जाने पे हमें कोई मोशन का इम्पैक्ट नहीं मिलना चाहिए. सो प्रेशर ग्रेडियंट या वेलोसिटी वगैरह सब वहाँ पे अभी भी जीरो ही होनी चाहिए फॉर ऑल टाइम्स at very large distances from the surface, and del P del x for y tending to infinity must be 0, since fluid is stationary for all times at very large distances from the planar surface. So यहाँ से conclusion आया कि del P del x at any yt or is same as del P del x at very large distances from the planar surface for all times. And since that del P del x for y tending to infinity for all times is 0, it means that
Actually, del P del X in this flow is 0. So this is how we prove this fact that del P del X must be 0 for Stokes problems. So therefore Stokes problems are governed by this classic equation. Okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कैन बी फंक्शन ऑफ टी ओनली. तो जो भी वेलोसिटी फंक्शन है वाई जेड और टी का वो इस तरह का होगा कि उसका सेकेंड डेरिवेटिव्स और साथ में जो सब्ट्रैक्शन टर्म लिखा हुआ है रो नॉट डेल यू डेल टी, ये कंबाइन करके हमें खाली टाइम का फंक्शन देंगे. ओके, और वो फिर वहां से कंक्लूजन आ जाता है कि डेल पी डेल एक्स मस्ट बी फॉर ऑल वाई एंड टी मस्ट बी 0 बिकॉज ऑफ द fact that at very large distances from the planar surface the effect of planar surface motion will actually never reach, and therefore we'll get the quiescent flow or stagnant fluid conditions there. And since body force in x is 0, so del p del x would be 0 at very large distances from the planar surface. And if it is 0 at very large distances, the same del p del x continues right up to the planar wall, so it will remain 0 for entire domain. So Stokes problems are governed by this type of an equation. So there is no role of any thermodynamic or whatever motion pressure gradient. Okay, so it's a pure kinematic problem with the velocity equation in x direction. Looking like this. So for large widths of planar surface, अगर आप z direction में planar surface को काफ़ी large ले लें in comparison to y direction, या ये मान लें कि planar surface इतना large है z direction में कि जो near the planar surface जो y distances हैं they are comparatively over which the velocity varies significantly, they are comparatively going to be less in comparison to the z direction widths of the planar surface. This is another way of saying that we try to solve problems let's say in a plane. Okay, that means motion characteristics को simply एक plane के अंदर देखना चाह रहे हैं हम, तो प्लेनर प्रॉब्लम बना करके. सो प्लेनर का मतलब है कि फिर खाली इट्स द एक्स वाई प्लेन इन विच द प्रॉब्लम इज बीइंग कंसिडर्ड. तो अगर एक्स वाई प्लेन में खाली कंसिडर होगी तो ऑब्वियसली जेड डिपेंडेंसीज विल बी neglected in this equation. So mathematically I am just writing all this. The derivatives along y, they are much greater than derivatives along z, so we write it as u is equal to u y t only. Z dependency khatam kar di humne and the equation is further simplified. So we get finally the equation in this form. The viscosity, dynamic viscosity mu naught is divided by rho naught because we can combine the two properties into a single kinematic viscosity. You have already learnt all this in your earlier fluid mechanics course. What is kinematic viscosity? So mu naught by rho naught, that is another property known as kinematic viscosity. Units are meter square per second, SI units. So therefore, to conclude, the governing equations and initial condition, boundary conditions for Stokes problems are, the equation is del U del t is equal to nu naught del 2u del y square, and initial condition is u is 0 everywhere in the fluid, which is of course y greater than 0 and less than equal to plus infinity. Y greater than 0 because actually at 0 there is the planar surface, and boundary conditions are of course at y0 and at y infinity, so they are written as u0t equal to some u, capital U, as some function of time. Remember कि general Stokes problems में we can talk of the motion of the surface, उसको generalize किया हुआ है u as a function of time, and of course at infinite distances the effect of the planar surface is not seen or felt, and everything is stagnant there. So u in t at time t is 0, and of course these BCs are valid for
t greater than 0. Now let us take a step forward to get move towards the exact solution. So the exact solution for a general motion ut, u as a function of t, जो आपने बाउंड्री कंडीशन ली है प्लेनर सरफेस पे, is difficult actually to obtain because you will have to specify some function form for this capital ut, and अगर आप एक जनरल टाइप का फंक्शन लिख के सोच रहे हैं सोल्यूशन निकल आएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट है. ओके, for mathematically. So therefore we consider some special cases by fixing this function, okay, capital ut. So first obvious thing which comes to mind is take ut as a constant function. So which we say ये उस तरह का प्रॉब्लम है जैसे कि कोई चीज इम्पल्सिवली एकदम से मूव कर दी गई हो. ऑफ कोर्स इम्पल्सिव मोशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है, रियलाइजेबल भी नहीं है कि जीरो टाइम में आप सडनली वेलोसिटी को जीरो से यू नॉट या फाइनाइट वेलोसिटी दे दें, बट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ वेरी लार्ज एक्सेलरेशन केस, है ना. एक्सेलरेशन इतना लार्ज है कि बहुत ही छोटे टाइम में द वेलोसिटी बिल्ड्स टू सम वैल्यू. ओके, सो ये इसका फिजिकल एक एक्सप्लेनेशन है. तो एक लिमिटिंग केस है वेयर वेलोसिटी इज इम्पल्सिवली set for the planar surface as some constant value u naught. Okay, and the second case is very much practically realizable, very easy to imagine rather. The second case is that of a oscillatory planar surface motion. Okay, so capital ut is simply taken as a periodic simple cos या sin function आप ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने cos function से दिखाया हुआ. It doesn't really matter, वो later on आप देखेंगे कि sin का भी solution very easily will get. So ut is equal to u naught some amplitude of the oscillation in the velocity. तो velocity oscillations के एक amplitude है u naught and it is varying periodically with time. So cos omega t, omega being the angular frequency of the oscillations, 2 pi f जिसको आप बोलते हैं. So solutions can be obtained with relative ease for these two cases. So ये हमारी Stokes first and Stokes second problem, they are known by the name of these names. Okay, so जो पहली बाउंड्री कंडीशन है उससे हम Stokes first problem बोलते हैं और second boundary condition is referred to as Stokes second problem. So let us now start looking at case 1. Okay, what is case 1? Case 1 means the Stokes first problem is this boundary condition. So the approach is to try to convert the PDE, ये जो governing equation है, into a ordinary differential equation using some transformation of the following type. So इसमें जो basic approach है वो हम जो दिखाने जा रहे हैं या जो आपको teach करने जा रहे हैं वो ये कि how to convert the PDE of this type, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तरफ आपका first derivative है with respect to one variable and equal to some constant times the second derivative of the same function with respect to the other variable. So how to transform this type of a PDE into an ordinary differential equation using some transformation of the type where u is taken to be a function of a single similarity variable, इसको हम similarity variable बोलते हैं eta, and eta is a function of the original two variables in the physical world जो हम problem में है हमारे. So eta is a function of y and t. तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को यूजुअली सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैथ्स में बोला जाता है. and eta is the similarity variable, the variable which is combining the other two independent variables, and u is being taken as a function of this similarity variable. So in order to find the similarity variable eta, we demonstrate the powerful use of pi theorem. ये वही बकिंगम पाई थ्योरम है जो आपने सेकेंड ईयर में लर्न करी थी फॉर अ सेट ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड हाउ वी कैन कंबाइन देम इनटू सम पाई ग्रुप्स और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और ग्रुप्स. सो लेट अस लुक फॉर अ डायमेंशनलेस सॉल्यूशन. पाई थ्योरम का यूज करने के लिए हमने अपने सॉल्यूशन को एक डायमेंशनलेस फॉर्म में हम देखना चाह रहे हैं. So our solution can be written in a dimensionless form in this way, that u upon u naught, okay, because u naught is the some kind of a velocity scale in this problem, Stokes first problem. So I write it as u upon u naught.
This is a function of some function of y and t, and of course it is dependent on the parameter, single parameter nu naught. So तो ये इसमें प्रॉब्लम में there are two parameters, एक capital U naught है which is taken as the velocity scale typical, and nu naught is the kinematic viscosity. So आपका solution जो है वो quite generally इस तरह से हम लिख सकते हैं dimensionless form में. So that means my function f must be a dimensionless function of y, t and nu naught. So ये जो variables हैं y, t and nu naught, these are all dimensional variables. इसमें मैंने parameter को भी account लिख लिया है, y, t and nu naught. They must be grouped into some dimensionless pi groups, है ना. ये जो मेरे ये जो variables हैं इनको जो है मैं pi groups में बनाना चाहूँगा, because my f is a dimensionless function. So Buckingham pi theorem can be used to find this pi group. What you do typically, you first make a matrix where you write down the fundamental dimensions, वो जो mass, length, time वगैरह जो fundamental dimensions होते हैं वो आप इन variables के लिखना चाहेंगे. तो y, t और nu naught के हमने m to the power a, l to the power b और t to the power c फॉर्म में अगर इसके डायमेंशंस लिख रहे हैं हम इनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो हमने ए बी सी की जो वैल्यूज हैं हर वेरिएबल की वो यहाँ टेबल में डिपिक्ट करी हुई हैं. तो सिंस y इज जस्ट l to the power 1, so my a value is 0 and my b value is 1 and my c value is 0 for y. Similarly for time it is simply t to the power 1, so my a and b are both 0 and c is 1. And for nu naught has the dimension, as I told you, उसके units meter square per second है, तो उसके dimensions हैं l to the power 2 and t to the power minus 1. So a is 0, l is b is 2 and c is minus 1. So this is how my the exponents of the various fundamental dimensions in which these y, t and nu naught can be expressed. तो अगर आप y, t, nu naught को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं m to the power a, l to the power b, t to the power c and similarly t and nu naught, तो आप a, b, c की वैल्यूज इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं क्या आ रही हैं. So from these we can conclude that there are total of 3 variables that I am trying to group into pi groups. So और मुझे कितने बेसिक डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, because the matrix tells you that none of the variables has got the mass dimension in them. तो खाली l और t इन्वॉल्व हो रहे हैं इनको एक्सप्रेस करने में y, t और nu naught को. So the number of basic dimensions involved in these 3 variables is just 2. Okay, in brackets I have written l and t. So यहाँ से हमें बकिंघम पाई थ्योरम से पता लगता है कि अगर ऐसा होगा तो number of pi groups, of course the minimum number of pi groups, of course it says pi theorem is on minimum number of pi groups, ज़्यादा भी हो सकते हैं इससे, लेकिन at least we can say that the minimum number of pi groups that can be formed among y, t and nu naught is 1, है ना. एक ग्रुप कम से कम बन सकता है. This is what pi theorem says. So by determining the total number of variables and number of basic dimensions involved, we can at least determine the minimum number of pi groups that will exist in this group of dimensional variables. Okay. Now to find that pi group, it can be found by simply saying that my group is involving these 3 variables, and suppose I choose viscosity, nu naught and t as my repeating variables. इस केस में एक ही ग्रुप है तो रिपीटिंग भी कोई वर्ड कोई खास मानी नहीं रखता, बट इन जनरल जो पाई थ्योरम का प्रोसीजर है, अगर एक से ज़्यादा पाई ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, यानी सपोज ये 3-2 के बजाय 3-1 होता, अगर बेसिक डायमेंशन एक ही इन्वॉल्व होते, तो फिर पाई थ्योरम के हिसाब से कम 2 पाई ग्रुप बनते. तो उन दोनों में एक कॉमन रिपीटिंग सेट ऑफ वेरिएबल्स लेना होता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रिपीटिंग वेरिएबल्स. अब यहाँ एक ही ग्रुप है तो उसमें हम किसी भी तरह से चूज कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स को एज अ रिपीटिंग वेरिएबल सेट. सो हमने न्यू नॉट और टी को चूज किया हुआ है,
तो अगर आप पाई ग्रुप लिखेंगे तो पाई विल बी सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ the variable which is left out, which is y, and simply multiplied by some powers of the repeating variable. So nu naught की power x ले ली, t की power y ले ली मैंने. Now because the pi group is dimensionless, so we simply write everything using the basic dimensions m, l and t and equate their powers on both the sides. So I will get 2x plus 1 as 0 if I equate the power of l, and if I equate the power of t on both the sides, I get y minus x is equal to 0. So using these two relations, I get x as minus half and y as minus half. So immediately as soon as I get xy values, I can say that my pi group is y over square root nu naught t. Now as soon as I get this pi group, I can write my similarity variable. Because the idea was similarity variable क्या था, function था y और t का. y और t should be combined in a dimensionless manner to give me the similarity variable, right? So this is how it is. So we get the similarity variable as k times k इसलिए बिकॉज अगर आप पाई ग्रुप में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें y बाय स्क्वायर रूट न्यू नॉट टी को, इफ यू मल्टीप्लाई एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो पाई ग्रुप ही रहेगा. ओके, इट विल रिमेन नॉन डायमेंशनल ग्रुप. सो इसमें जो सिमिलैरिटी वेरिएबल है वो हम एक जनरल सिमिलैरिटी वेरिएबल लेके चलेंगे, मोस्ट जनरल. तो पाई ग्रुप को हम k से मल्टीप्लाई करके एक सिमिलैरिटी वेरिएबल ले सकते हैं टू कीप मैटर्स वेरी जनरल. ओके, सो ईटा सिमिलैरिटी वेरिएबल इज k टाइम्स y बाय स्क्वायर रूट न्यू नॉट t. ओके, हेंस वी लुक फॉर अ डायमेंशनलेस सॉल्यूशन, जो हमने अब स्टार्ट ही वहीं से किया था सिमिलैरिटी सॉल्यूशन अप्रोच को, कि हम एक सॉल्यूशन को डायमेंशनलेस फॉर्म में अज्यूम करेंगे. u by u naught is some function of eta, and now since we have found what is eta, so we will write eta as k times y by square root nu naught t. So once we have defined my similarity variable and my solution in this form, my next job is to transform the problem in terms of these eta and f. क्योंकि अब जो मेरे पास जो चीज़ रह गई है निकालने से, वो I have to somehow find a differential equation for this function f eta, because अगर मैंने f eta का differential equation बना लिया, उसके bc वगैरह सब लिख लिए, तो उसका solution जो है यानी f eta का solution जो है वो मुझे u by u naught दे देगा, which is actually the solution, dimensionless solution that I desire. Okay, so let us transform the problem now. So my governing equation is del u del t is equal to this. So I start writing the derivatives now. So del u del t will be del by del t of u naught f eta, which is obviously using the relation u by u naught is some function of eta. And now I start using the chain rule because eta is a function of time. So u naught del f del t is equal to minus u naught f dash eta, which is the derivative of f with respect to eta, and the partial derivative of eta with respect to time. So if you differentiate eta with respect to time using the fact that eta is k times y by square root nu naught t, you will get this term, which you can finally write as del u del t as minus u naught f dash eta, and the term in brackets is nothing but eta by 2t. Okay, so del u del t is this. Similarly, del u del y you can show it to be equal to u naught f dash eta and k by square root nu naught t, and if you differentiate it again you will get u naught f double prime, second derivative of f with respect to eta, f double prime eta, and of course again a factor of k by square root nu naught t, so makes it k square upon nu naught t. Right, different. So once we get these derivatives, we can put them in the governing equation and simplify. So substituting the partial derivatives, you will see that a lot of things cancel. In fact, कोई भी पैरामीटर इस इक्वेशन में नहीं रहेगा.
यू नॉट भी कैंसिल हो गया, न्यू नॉट भी कैंसिल हो गया, इनफैक्ट t variable also gets cancelled, and finally we get a ODE of this form, f double prime plus eta upon 2k square. Of course k was a positive constant. Positive इसलिए बोल रहे हैं because as I said नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, the value of constant k is chosen to be positive. Positive इसलिए ले रहे हैं so that eta is also positive for y positive. यानी कि जो upper half आपका है planar surface के, वो y positive domain है. तो y positive domain should be mapped to eta positive numbers. The dimensionless similarity variable जो है वो भी positive ही आना चाहिए for y positive. तो अगर ये जब भी possible है जब आपका k positive होगा. So that's why we choose positive values of k, just to map y positive to eta positive values, right? Now I would like to point out one thing. ये जो similarity वाली approach आपने देखी है dimensionless solution के assume करके जो हम चलते हैं, u by u naught is equal to some function of eta and eta is some function of y comma t. ये इसका एक चेक ये है कि अगर आपने अपनी एनालिसिस करेक्टली करी है, डायमेंशनलेस सिमिलैरिटी वेरिएबल ईटा हैज बीन फाउंड इन अ करेक्ट वे, तो उसका जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि जब आप प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाना चाहिए. अगर वो नहीं आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो इसका मतलब यू गो बैक एंड चेक योर हाउ यू हैव कंस्ट्रक्टेड द सिमिलैरिटी वेरिएबल. प्रॉब्ली सिमिलैरिटी वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करने में या पता करने में कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक होगा, तभी ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा ओडीई में. अदरवाइज यू विल सक्सीड इन ट्रांसफॉर्मिंग द पीडीई इनटू एन ओडीई. ओके, नाउ सिंस द गवर्निंग इक्वेशंस तो आ गया, बट ये सेकंड ऑर्डर है तो इसकी दो कंडीशन भी चाहिए मुझे एफ की. सो आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माय इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस नाउ in terms of my dimensionless function f and of course the similarity variable eta. So initial condition is u is equal to 0 at t0, and which means that u by u naught will also be 0. So f is 0 as eta goes to infinity. Why eta would go to infinity as t is 0? Because eta is defined as k times y by square root nu naught t. तो अगर आप उसमें t को 0 की तरफ ले जाएंगे तो eta for all y's eta will go to infinity. So boundary conditions are so what is written in red is one condition on f. Okay, f must go to 0 as eta goes to infinity. अब boundary conditions पे आते हैं तो y 0 पे u is equal to u naught है. So it means my f u by u naught, which is the ratio u by u naught, must become 1. Okay, at y0 for all values of t. So it means y0 at all values of t means eta is 0. So f is equal to 1 for eta 0. This is another condition that I have obtained on f. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो कंडीशन ऑलरेडी आ गई हैं f की, एक eta 0 पे और एक eta infinity पे. So you must be wondering that what will happen to the second boundary condition, क्योंकि दो तो ऑलरेडी हो गई हैं f में. सो क्या वो तीसरी कोई कंडीशन आ जाएगी, और तीसरी आ गई तो फिर ये तो सेकंड ऑर्डर ओडीई है. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन वी गेट. सो एज y गोज टू इंफिनिटी u is 0 for all times. So it means that as eta goes to infinity, f which is u by u naught must also go to 0. So again we get back the condition which is same as what we got with the initial condition. Okay, so second BC से हमें कोई नई कंडीशन नहीं मिल रही है और वही कंडीशन मिल रही है जो इनिशियल कंडीशन से मिली है. सो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली दो ही कंडीशंस हैं f की. एक है जब ईटा वेरी लार्ज हो जाएगा इन्फिनिटी तो f शुड गो टू 0, एंड व्हेन ईटा इज इक्वल टू 0 f is 1. So I finally write them in the box that IC और BC2 वो combine अगर करा जाए तो खाली एक ही कंडीशन मिलती है, f infinity is 0, and when BC1 is taken we get f0 as 1. So the ODE f double prime plus eta by 2k square f prime is equal to 0 is second order and it requires two conditions on f. So these are the conditions which are put in the box. ये दो conditions हमें use करनी है to obtain the solution of the ordinary differential equation.
Now in principle solution can be obtained for any positive constant k. ये important है कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू k से ही सोल्यूशन निकल सकता है. सोल्यूशन तो किसी भी पॉजिटिव k वैल्यू से हम निकाल सकते हैं इस ODE का. और आप लेटर ऑन देखेंगे once I'll proceed with the solution that ये this is very easily done. Even you can do it for any positive constant k. But we choose some value that permits the analytical solution in its simplest form. और आप ये भी देखेंगे कि k की वैल्यू चूज करने से सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो इवेंचुअली आएगा यूनिक ही. ओके, सो बट द ओनली थिंग इज दैट यू कैन डू इट फॉर एनी वैल्यू ऑफ k. सो इवेंचुअल सोल्यूशन जो आपका फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ईटा, वो एंड सिंस ईटा इज k टाइम्स y बाय स्क्वायर रूट न्यू t, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट वैल्यूज मतलब वो जो आएगा ईटा के साथ, हाउ इट विल वेरी विद ईटा, वो इवेंचुअली सेम ही आएगा चाहे आप k की किसी वैल्यू के लिए करें. तो आप वो वैल्यू चूज करते हैं जिससे कि आपका जो एनालिटिकल सोल्यूशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे. सो वी चूज सम वैल्यू दैट परमिट्स वी चूज सम वैल्यू ऑफ k दैट परमिट्स द एनालिटिकल सोल्यूशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये हमारे जो फोर फादर्स थे यानी स्टोक्स वगैरह, जो उनका मैथमेटिकल विजन था, वो ये उन्होंने ये बहुत देख लिया था कि अगर हम 2k स्क्वायर की वैल्यू हाफ लेते हैं, सो दिस इज अचीव बाय चूजिंग 2k स्क्वायर एज हाफ. सो इफ वी चूज k वैल्यू एज हाफ इटसेल्फ, यानी k को अगर आप हाफ लेंगे तो k स्क्वायर इज 1/4, सो 2k स्क्वायर इटसेल्फ कम्स आउट एज हाफ. So this is achieved by choosing 2k square as half और k is equal to half itself. क्योंकि k खाली पॉजिटिव ही लेना है तो इसलिए आई एम टेकिंग एज हाफ प्लस हाफ. सो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा ODE जो है वो f डबल प्राइम प्लस ईटा बाई 2k स्क्वायर है. तो 2k स्क्वायर की वैल्यू हाफ लेंगे तो 2 ईटा f प्राइम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. And notice there is a clever trick involved here, that the differential equation is actually written as a derivative of d by d eta of the first derivative df d eta and e to the power eta square, and this is set equal to 0. You can verify this by performing the differentiation and checking that you get back the original ODE written at the top. So you can integrate it very easily at least once. So df d eta e to power eta square becomes a constant, let's say c1, and then df d eta is simply written as c1 times e to the power minus eta square. So e to the power minus eta square या x square या z square, ये एक बहुत ही it should ring a bell. ये जो फंक्शन है ये एक गॉसियन फंक्शन कहलाता है. ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में बड़ा फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कोई कोर्स किया हुआ है तो यू मस्ट बी रिकॉग्नाइजिंग दिस फंक्शन. ओके, तो जो आपका f का डेरिवेटिव है df d eta वो प्रोपोर्शनल आ रहा है टू अ गॉसियन फंक्शन. एंड गॉसियन फंक्शन का कोई एनालिटिक क्लोज फॉर्म इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं हो सकता है. हम e टू पावर माइनस z स्क्वायर dz को एनालिटिकली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो इसके जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो न्यूमेरिकल या कुछ और वेज से अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं. जनरली दे आर गिवन इन बुक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो अब ये हमारे पास आ गया है df d eta, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा जो f है इट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म by integration. So I write f as simply c1 times some integral 0 to eta, upper limit is eta, and e to power minus z square dz plus c2. So there are, because ये जो last integration है उससे हमारा एक और constant आएगा plus c2. If you differentiate this solution that I have written with respect to eta, you will get back the basic जो इससे पहले की स्टेप है df d eta is equal to c1 times e to power minus eta square. So this is the solution. Now you can use the boundary conditions f0 as 1 and f infinity as 0 to get these two constants. तो इसमें मैंने एक बार eta 0 रख दिया तो 0 रखने से इंटीग्रल 0 हो गया and c2 becomes 1, and once I take eta infinity, so c1 times 0 to infinity e to power minus z square dz plus 1 must be 0,
एंड ये जो इंटीग्रल है गॉसियन इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है इन्फिनिट डोमेन पे, इसकी वैल्यू वेल नोन है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। तो ये मैं मैथ्स से बोरो कर रहा हूं ये रिजल्ट कि e टू पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज रूट पाई, and since this is an even function so it becomes twice 0 to infinity e to power minus z square dz and equal to root pi। so 0 to infinity वाला जो इंटीग्रल है वो half of root pi हो जाएगा, 0 to infinity e to power minus z square dz। so my c1 constant is coming out as minus 2 by root pi। okay, so I can finally write the solution by using the values of C1 and C2 as f eta for Stokes' first problem is equal to 1 minus 2 by root pi 0 to eta e to power minus z square dz। and of course the values for different value of eta इस इंटीग्रल की जो वैल्यूज हैं वो मुझे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में टेबुलेटेड वैल्यूज मिल जाती हैं इस इंटीग्रल की, राइट। in fact this integral 0 to eta e to power minus z square dz, ये जो है ये हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय रूट पाई, इनफैक्ट इस पूरे की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो इसको हम एरर फंक्शन भी बोलते हैं। हमारी बुक्स ऑन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे तो ERF ईटा इसको दिया हुआ होता है। ओके, 2 by root pi यहाँ पे मिसिंग है, so you write down in your notes that the function 2 by root pi 0 to eta e to power minus z square dz is called the error function ERF eta। and of course don't forget to write how eta is defined for this solution। eta is equal to, now k value half के लिए हमने ये solution निकाला है, so therefore I now need to write down my eta as y by 2 square root nu naught t। y by 2 क्यों? because k की वैल्यू हाफ के लिए ये solution has been written। and of course we need to remind ourselves that what is f eta? f eta is just the dimensionless value of u over u naught। so now let us examine the nature of the solution and talk about something very important known as edge of viscous layer। okay, so what is edge of viscous layer? It is interesting to examine the characteristics of the solution of the Stokes' first problem। so they look like this as the graph is shown। so जब आपका y 0 होगा तो u by u naught is 1 and from there it asymptotically decays, the velocity decays as I increase or advance in y direction। so दो curves दिखाए मैंने, एक time t1 पे एक t2 पे। now time t2 is greater than time t1, तो t1 पे the curve is more steep and it decays very sharply to 0 as you increase y, and with time more and more fluid velocities develop in the fluid, so the decay is smaller and it gradually goes to decays to 0। so the dashed line shows a particular ratio of u by u naught। so suppose I take a small value which is 0.1, तो 0.1 का जो इंटरसेक्शन है t1 और t2 कर्व पे वो हमें ये दिखाता है कि जो 0.1 रेशियो है u by u naught, it will be obtained at smaller value at lower times or larger times पे it will be achieved at much higher value of y। so this is how the solution। now we can conclude this part 1 lecture by defining the edge of viscous layer। कोई sharp edge नहीं होगी because motion goes asymptotically to 0 as y goes to infinity। so we can define edge of viscous layer at any time as the distance from surface at which a particular ratio, let's say very small value u is 0.01 times u naught। तो हम ये कह रहे हैं एक्चुअली कि आपका जो डिके है वो 99% डिके हो चुका है और खाली 1% वैल्यू रिमेन्स u naught ऑफ द प्लेनर सरफेस इन द फ्लूइड। तो ये किस डिस्टेंस पे होगा? दैट इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग एज द एज ऑफ विस्कस लेयर। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा, सो लेट अस ट्राई टू वर्क आउट दिस in a very simple way।
So u by u naught is 0.01, which is the dimensionless value of the function f at some eta, which I am calling as eta star, because a particular eta पे ये value 0.01 होगी. And since my f eta is 1 minus the error function eta star, error function की values हम probability books या statistics से देख सकते हैं. So error function की value हमारी आ रही है 1 minus 0.01, so it is 0.99. Now from tables of error function we find that eta star is approximately 1.8. अगर आप tables में जाके देखें तो 1.8 पे हमारा जो error function है वो 0.99 हो जाता है nearly. So my edge of my viscous layer, y edge upon 2 square root nu naught t, ये basically eta की हमारी definition है, y by 2 square root nu naught t. तो eta star एक खास value है, so that's why I'm writing y as y edge, and this is approximately 1.8. So it means that my edge of the viscous layer is approximately, which is to a good approximation, 3.6 times the square root nu naught t. So what this shows, that my viscous layer grows in time and it is proportional to square root nu naught and square root time. So it is actually proportional to the product of square root nu naught and t both. So हम देख सकते हैं कि किस तरह की law follow कर रहा है. The higher the viscosity in nu naught, then the more will be the corresponding edge of viscous layers for the same time, and as time grows square root t के साथ ये grow करती जाएगी. So motion of surface is propagating along y by viscous diffusion in accordance to the law y is proportional to square root nu naught t. ये बहुत important है कि streamlines जो कि x के along है, तो streamline के normal जो viscous effect से जो momentum का transfer है वो it follows the law that the distance covered by momentum transfer perpendicular to the streamlines in this Stokes first problem, that distance is proportional to square root nu naught t. This is a very important outcome and plays a very important role in the development of boundary layer theory. तो जो आप next unit में boundary layer theory, which will be taken up by Dr. Syed Fahad Anwar, he will use this to a very great effect. Okay, this powerful conclusion from Stokes first problem. So right, we come to the end of the lecture number 20 part 1, and what remains to be discussed in the second part is the Stokes second problem, where the planar surface oscillates periodically in time. Thank you very much.